अच्छा, इंडिया में जैसे होता है या फिर आई एम श्योर ऑल भी एशियन कंट्रीज़ में पेरेंट्स पुश करते हैं बच्चों को पढ़ने के लिए कि बहुत कॉम्पिटिटिवनेस बहुत होती है क्लास में, एग्ज़ाम्स भी होते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम होता है, तो कंपैरिज़न भी होता है, बच्चों को एनकरेज करा जाता है कि अच्छा परफ़ॉर्म करने के लिए। तो यहाँ पर भी ऐसा कुछ है क्या फ़िनलैंड में? फ़िनलैंड में मुझे ऐसा लगता है कि इट्स जस्ट माय पर्सपेक्टिव पर ऐसा है कि दिस इज़ अ कंट्री व्हिच डज़न्ट एनकरेज कॉम्पिटिशन दैट मच। बच्चों को उतना नहीं सिखाया जाता है कि हाँ, आप जाओ और किसी के साथ में ऐसे कॉम्पीट करो। आई मीन इट्स ओके इफ यू डोंट गेट अ जॉब, आपको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट मिल जाएगा। इट्स ओके इफ यू आर नॉट डूइंग वेल इन द स्टडीज़, यू नो आपको एक सपोर्ट ग्रुप मिल जाएगा, आपको एक स्पेशल अलग से आपको सिटी सपोर्ट दे देगी। तो यहाँ पे उतनी एनकरेजमेंट नहीं है कि हाँ, यू हैव टू बी द बेस्ट और वो सब स्पेशली एकेडमिकली, ऐसा मुझे लगता है। कंपटीशन की जहाँ तक मैं बात करूँ उसका नुकसान तो है ऑब्वियसली स्ट्रेस एंड ऑल बट उसके फ़ायदे भी बहुत हैं जो बच्चे हैं कंपटीशन की वजह से ये काफ़ी अडेप्टेबिलिटी आती है काफ़ी बड़े प्लेटफॉर्म पे उनको परफॉर्म करने की एबिलिटी आती है और कॉन्फिडेंस आता है। काफ़ी कॉन्फिडेंस आता है और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब आप इंडिया से कंपेयर करते हो तो कुछ चीज़ें हैं जैसे सेफ्टी है, तो यहाँ पे सेफ्टी बहुत ज़्यादा है। मतलब अगर यही चीज़ मैं इंडिया में सोचूँ कि बच्चे अपने आप स्कूल जा रहे हैं या स्कूल से वापस आ रहे हैं तो आई कैन नॉट इमेजिन कि ऐसा हो पाएगा क्योंकि मैं हमेशा वरीड रहूँगी कि हाँ, वो रोड तो ठीक से क्रॉस कर रहे हैं ना, वो पहुँच गए। बट यहाँ पे इट्स वेरी सेफ लाइक एक बार बच्चे घर से चले जाते हैं तो मुझे कोई टेंशन नहीं होती कि अभी वो कैसे आएँगे, क्या होगा? सो ये भी एक बहुत अच्छी और पॉज़िटिव चीज़ है यहाँ पे। अच्छा, जनरली एशियन कंट्रीज़ में क्या होता है कि वन ऑफ द पेरेंट इज़ ऑलवेज़ अवेलेबल फॉर द चाइल्ड। बट यहाँ पर अब ग्रेजुअली ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि वुमेन आर वर्किंग इंक्रीजिंगली। तो ऐसे में यहाँ पर फिनलैंड में क्या है कि हाउ डू फिनिश पेरेंट्स एंगेज देयर किड्स इन एक्टिविटीज आफ्टर स्कूल एंड हैव यू आल्सो अडॉप्टेड द सेम? हॉबी क्लासेस होती हैं यहाँ पे स्विमिंग क्लासेस हैं और स्केटिंग क्लासेस हैं या फिर फुटबॉल क्लासेस बास्केटबॉल तो ये हॉबी क्लासेस में जो है मेनली लोग एंगेज करते हैं तो So after school, till grade 1 and 2, in the first two grades, the school itself provides you a afternoon club. So the kids can do various activities there. There are various kind of clubs depending on which school the kid is going to. So there are gaming clubs. You can play football, and there are drawing clubs, arts clubs, dance clubs, and all those kind of things. Other than that, of course, there are various physical like outdoor and indoor activities like winter skiing is there, swimming is there. So this all extracurricular activities is somehow integrated part of the Finnish education system. And if you go to the, for example, any swimming pool, you will see that how actively the Finnish babies they are made to learn swimming. The toddlers. So they are made to swim and they are taught all these life skills here in Finland by their parents themselves. I see parents who are teaching their kids how to sail a boat, you know, boating and how to like catch fish and to cook the fish in nature. So I think all these are life saving skills and other than all these I mean when the kids are not in the younger grades, grade 3 onwards, there is no afternoon club. So you can of course go to various kind of activities. And for Indian parents there are also a lot of cultural classes here like various dance forms. I think theater and drama is there, architecture clubs are there, so all these are made for the kids. So And I've also seen how much the Finnish parents involve their kids into sports. A lot of sports activities, whether it is in summers or winters. Football is through goes on throughout the year. Cricket goes out throughout the year. Then in winters we have more options: skiing, sledging, ice skating and all. पर ये भी चीज़ मैंने ऑब्जर्व करी है क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक में कोई टाइम वेस्ट नहीं होता और वेदर की ऐसी कोई मार नहीं है। बहुत कन्वीनियंट है यहाँ पर ट्रैवल करना फिनलैंड में। तो यहाँ पर पेरेंट्स भी बहुत एंगेज रहते हैं बच्चों के साथ ये सब एक्टिविटीज़ में। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो वहाँ पर प्रेज़ेंट रहते हैं और खुद भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो आपने भी शायद देखा ही होगा।
हाँ जी, मैं अगर स्विमिंग क्लास की बात करूँ तो मैंने ये देखा है कि यहाँ स्पेशली ऐसी स्विमिंग क्लासेस हैं जहाँ पे आपने लाइक टुगेदर पेरेंट एंड चाइल्ड इट्स लाइक कॉम्बो काइंड ऑफ स्विमिंग एक्टिविटी है जिसमें साथ में आप स्विम कर रहे हो, सीख रहे हो और बच्चे को काइंड ऑफ सपोर्ट कर रहे हो। तो वो एक काफ़ी अच्छी चीज़ है और मैंने भी अपने बेटे के साथ वो क्लासेस किए हैं, तो काफ़ी यूज़फुल रहते हैं, बॉन्डिंग बनती है बच्चे में, आपका टाइम स्पेंड हो रहा है साथ में, तो ये चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं यहाँ पे। And here, whenever I travel in public transport, I've noticed how quiet people are, and also generally kids don't make much noise over here, or maybe this is something I have not noticed. But is it something which is taught from the childhood to the Finns? I think as soon as the kids enter this Paivakoti or the kindergarten, so they are taught to be disciplined. And Finns, I think in general, overall, they are very quiet. And Finland is a very peace-loving and silent country. So silence maybe is in uh, Their genes. in their blood or something. I don't know, but yes, I agree with you. Also heard about the other life skills which are taught in school, like something related to carpentry, Yeah. stitching, Stitching, sewing, yeah. and then fireless cooking. So all these are taught in school itself. And are there any child support activities for the toddlers and school going kids over here in Finland? Yes, there are a few organizations like MLL, Mannerheim Lastenlito, and the local church. So whichever area you are living, there are some churches. So they have a lot of these activities, and they support these kids and the school going kids. So they have throughout the year a lot of activities going on. You just need to contact them. Also, this Mannerheim Lastenlito, they provide you with the babysitter if needed. They also they charge something minimal, but all these are the options possible. And for 2 years or kids less than that, they have activities twice a week in Nuorsitalo. So in your neighborhood, there is this Nuorsitalo, which means place which is usually close to the library. You have a gathering where the younger kids will meet, so it's there. And also the libraries are full of activities. So whichever area you have, there is a awesome library, especially in Helsinki Espoo area. So you can always approach your library also, and there is a lot of information available in these places. And are there any support groups which the parents can reach out to? Nowadays, there are quite many. So there is Familia. There is Familia is also a group wherein multicultural families or parents who are from different nationalities, they approach there, and then they also do. And there is also some Swedish groups like Lukan or Lukan Integration. They do these kind of activities with usually expat parents. And then Perhe Keskos is there. There is also this YWCA, YMCA, and extended to that, nowadays I also read about this. It's a neighborhood mother. So there's a mother in the neighborhood who has a lot of information. So you can always reach out to the neighborhood governments. So if you approach that mother, I think the NGOs are also training moms in the neighborhood. So you can always help another mom in that area. I think that's an amazing concept. जैसे कि मैंने कहा कि देयर इज नो परफेक्ट पेरेंटिंग स्टाइल, जो कि मुझे अच्छा लगे वो हो सकता है कि आप लोगों को अच्छा ना लगे वैसे पेरेंटिंग स्टाइल, तो देयर इज नो राइट और रॉन्ग व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग. True.